Assalamu alaikum Okay. everyone, and good evening. This is Mustafa Jafri from Al Nafi, and today we have a very special guest with us, Mr. Ashhal Tahir. He has been one of our most dedicated students since the past 3 years. He is currently in Finland, and he is working in a company called Navitec Systems. He works in basically autonomous vehicles. Mr. Ashhal Tahir has been studying the career advancement track with us. और आज ये हमारे साथ मेरी कहानी एपिसोड 5 में आए हैं, जिसमें ये अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगे कि हाउ डिड ही गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, हाउ डिड ही गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब, and what are his thoughts on Al-Nafi and the content that we're providing, the services that we're offering. So let's jump right into it. Ashhal, how are you doing? Shukriya. Walaikum assalam. I'm doing good. So thank you for asking. All right. So Ashhal, our audience, they want to know what are you अभी आप अभी currently क्या कर रहे हैं? आप अभी as I mentioned आप अभी Navitec Systems में, so थोड़ा सा और बताइए आपकी जॉब क्या है and how is it going for you? ठीक है. Currently मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ Navitec Systems में. जो हमारी कंपनी है ये फोकस्ड है AGVs, automated guided vehicles, और more like AMRs, automated mobile robots. इनके लिए we make like a navigation software. So maybe I can give you a similarity of what kind of a navigation software we make. Yeah. So as many of you might have heard about Tesla. So जो Tesla गाड़ी है ना उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है जो उसको नेविगेट करता है autonomously. Yeah, of So वो course. software is for Tesla that जो is like driven on the public roads. जो बाहर जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उस पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना ड्राइव Yeah. होती है. जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो इंडोर एजीवी होती हैं जो इंडोर ड्राइव हो सकती है. फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यू हैव लाइक वेरी बिग वेयर हाउस जहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स मूव करने होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लॉजिस्टिक्स एंड सो ऑन. तो उसके लिए जो एजीवी होती है ना इंडोर एनवायरनमेंट में जो ड्राइव करती है 2 डायमेंशन नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स यूज करके, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना वो हमारी कंपनी करती है. ठीक है. उसके अलावा we also have some many more softwares and also we support both 2D and 3D navigation. जो मेरा रोल है कि is more about region specific और quite broad रोल है. तो for example मैं as an engineer, मेरी engineering background है, तो मैं मैंने किया था commissioning से कि I go and commission our softwares. We prepared the AGVs and we help them test drive them and so on. I started as a commissioning engineer. Then I did some testing. Now I do more like a customer success manager, or you could say more probably some similar to what you have in Nafi as well. Yeah, So मैं क्या करता हूँ कि I start with the customer's journey. They start with us. They sign a contract. They know nothing. So from the very beginning, I help them. Like for example, I help them give training. I help them commission the systems. I help them train their staff, and then I help them, start test the software and get into use and so on. So like the whole journey from the start to the beginning before they go get live for the real production or before they sell the solution to the end customer, the whole journey I pretty much do that. My role is quite broad, so every day I'm doing some different stuff. It's not like the same thing I'm doing. And sometimes we are also traveling, and we are traveling a lot on site to different customer sites. And again, depends on the context and on the use case or the scenario. Our job or the work we're supposed to do is quite different. But again, जो मैंने नाफे से पढ़ा उससे मुझे फायदा हुआ है, मुख्तलिफ तरीकों से हुआ है, और उसकी बेसिस पे भी मुझे डिफरेंट जॉब ऑफर्स भी आई है. ठीक है ना. कईयों को मैंने नहीं परसू किया बिकॉज what I studied was more focused for an entry level job, but I have like a quite lot of experience under my belt. So what I was asking for, they couldn't provide that. So that's like was one thing. So that's why I'm also planning to continue studying more with Jan after while I'm
continuing my job here. So yeah, sorry, my answer was quite broad, but that's even better. Yeah. So आपकी job काफी broad, and it's a quite diverse role, as you mentioned it. So basically आप पूरी journey, the whole journey from the start to the end, you're basically monitoring the whole journey, right? exactly. Right. So let's go a bit back into the time, and let's talk about के आपने Nafi. When did you come across Nafi, and like first, and what made you decide to choose it? All right, so I came across Nafi, I think in 2019, most probably. Right. That was when I heard about digital forensics, and that was because one of the professors. I'm basically I'm a GK का graduate हूँ, GK Ghulam Sahab Okay. Khan Institute जी Pakistan जी जी. में. So one of my professor from there, he was giving I think presentation, or I don't know, एक वीडियो शेयर हुई थी जिसमें वो ना एक ऑडियंस के साथ बात कर रहे थे. तो उस ऑडियंस में वो प्रोफेसर थे, और ना साथ में फैसल भाई भी थे. तब मुझे नहीं पता था कि फैसल भाई कौन है, क्या है, तो क्या सीन है. Right. तो तब दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन. तब फिर उन्होंने के बाद ना आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट, एंड आई डिग अप क्वाइट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि यार डिजिटल फोरेंसिक है, आपके पास ये है, और काफी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है ना, डिफरेंट कोर्सेज स्टडी करने की. तो Yeah. I think tab I didn't pay much attention to it because it was something uh, come across every day. It was some new information. But after a while, I then have one of my friend studied also from Ghulam Isaac Khan ji ki, studied with Faisal Bhai, and then I also have another of my friend uh, forgot his name. He's also with Yusuf. Yeah. He also is part of Yeah. Yeah. Nafi. So all of us, Yes. we are from the same batch. We know each other, and that's how I came to know more about Nafi. So that's why I say, Right. yeah, let's give it a go, and let's enroll in one of the program. And at that time, when I enrolled, Nafi was offering this CAT, or career advancement track. Yeah. That's what I took, and I studied. I think in 6 to 8 months, I finished everything, and then based on that, I started applying for jobs. And then, of course, I got quite good feedback as well from on that. So Right. Right. So आप फिनलैंड में हैं, और थोड़ा सा आप थोड़ा सा मार्केट के बारे में बताइए, जॉब मार्केट के बारे में, कि हाउ इज द जॉब मार्केट और इन यूरोप एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एंड क्या एम्प्लॉयज व्हाट आर दे लुकिंग फॉर एग्जैक्टली, आई मीन व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन द जॉब मार्केट. ठीक है. तो मैं आपको फिनलैंड का डायनामिक्स थोड़ा सा बताता हूँ कि फिनलैंड इज लाइक पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, और द वेस्टर्न यूरोप जो है ना, दे आर क्वाइट this is an economy that is based on very skilled jobs. So for example, automation or emerging technologies का जो level है ना, that's like quite high here. So if you are looking for like traditional construction jobs and or other jobs that you see in other countries, those are not quite a lot of them here. But on the other hand, you have quite many skilled jobs, for example, in the field of these emerging technologies. So जहाँ पे जो भी कोई काम कर रहा है ना, मेरे इर्द गिर्द जिससे भी मैंने इंटरेक्ट करता हूँ ना, अपनी फील्ड में या मेरी फील्ड से बाहर, हर किसी ने इस मास्टर्स लेवल इज लाइक द मिनिमम दे हैव. So they have studied quite extensively, and they do have quite an extensive range of skills, and they do have good experiences on their as a background. Based on that, they can claim quite good salaries as well. So इसलिए if anybody is coming there, I strongly suggest that they are prepared before they come here. Otherwise, it's more like wasting a lot of time, because आप आ सकते हैं, of course, काफी लोग आ रहे हैं, पर आप जब prepared नहीं होंगे तो आपको ना फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और जॉब्स, ठीक है ना. Sometimes they are not enough. They just get barely things done. On the other hand, you have to study the university, and then you also are maybe want to study a Nafi courses also, and it gets extremely difficult. Not impossible, but still
very difficult. So I strongly suggest कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं आप जरूर आएं. कैसे आना, कैसे आना, क्या करना, किधर अप्लाई करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है. बट प्लीज कम प्रिपेयर्ड. Alright, so because this is very important कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, दे गो अब्रॉड, यूके, जहाँ भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहाँ जाके उनको और जॉब्स करनी पड़ती है. Exactly. Yeah, so it's very important that they come prepared and they have the right Yes. skills. And it's आजकल Ashhal, as you know as well कि बहुत सारे बहुत सारे platforms हैं जहाँ पे skills लोग सिखा रहे हैं, online education platforms हैं. So I would again ask you कि इतने सारे बाहर options हैं, we have a lot of options. You have Udemy, you have Coursera, you have so much, yeah, you have so many options. What made you specifically choose Al Nafi out of those? Given that in 2019 Nafi was a pretty brand new name, right? They were Yes, just starting off. So what made you choose, what made you choose this? Yeah. क्या लगा? Okay, so here is the thing. मैंने खुद काफी qualifications की हैं, masters किया है मैंने. I am also been part of a PhD. I have done Udemy courses. I have done, I don't know, quite many things. The difference with Nafi is that it's to the point. What does to the point mean is that if you need a job and if you finish what Nafi is teaching you, then you get the job done. बाकी courses में क्या होता है? For example, आप Udemy पे आप बैठते हैं ना, तो आपको courses पढ़ लेते हैं. Then you need to have relevant experience as well, ठीक है ना? उसके लिए फिर आपको you need to combine, to pick and choose different courses together and from different platforms. And for example, आप डेमी से फ्री कोर्सेज पढ़ लिए आपने, मगर उसके बाद आपको इतना लेवल फिर भी कई दफ़ा नहीं आता, तो आपको फिर जो पेड कोर्सेज होते हैं ना, कोर्सेरा की वेबसाइट से और दूसरी वेबसाइट से, वो लेके पढ़ने पड़ते हैं. मगर विद नाफी आई वुड से you get everything done on one single platform. You get to do these labs as well as the courses as well as pretty much everything that you need. The thing is, people don't know what they need, so they go and follow what they see on the like the social media. Yeah, exactly. Before you know what you need, you can't, whatever you decide will not be like your best option. It's just like going with the flow, going with what people are telling you. So I would always say कि आप अपना जो होमवर्क है ना, आप वो जरूर करके आए. आप अपने आप मार्केट को अंडरस्टैंड करें, जॉब की नीड्स को अंडरस्टैंड करें, फिर देखेंगे ये स्किल्स आप कहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, और इन बेस्ट पॉसिबल वे, और आई वुड से इन द मोस्ट शॉर्ट पॉसिबल टाइम एज वेल. क्योंकि आज के दौर में इफ यू आर रियली वांना climb the ladder and move ahead and make a lot of money, I don't know, maybe majority का ये ख्वाहिश होती है, but they can't get things done because they don't know the steps. As long as you don't know the steps, you don't know the people, you don't know where to look, you can't make a good choices. But again, I would say enough is where you can find everything in one place. So that's my experience. So. Yeah, and that's the issue that we have, based on personal experiences as well. There is so much content out there, how Exactly. इतने platforms People हैं बाहर, get इतना confused. Yes. yeah, exactly, इतने सारे options हैं, and by the face of it, by the look of it, हर बंदा same चीज पढ़ा रहा है, हर बंदा आपको एक कोर्स से चीज पढ़ा रहा है. But what really counts is actually hands-on experience, hands-on practice on what you're learning. So that's what actually matters, and this is what we want to teach. अल्लाफे का यही बेसिकली मकसद है कि आपको जो जॉब पे सिखाया जा रहा है, आपसे जो जॉब पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हम आपको वही सिखा रहे हैं और वो आपको हैंड्स ऑन करा रहे हैं. सो आई थिंक समवन फ्रॉम द ऑडियंस रेज देयर हैंड. आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ी देर वेट करें, आपको एंड में मौका मिलेगा सवाल करने का. हम लोग सबसे सवाल लेंगे जिसके भी कोई सवाल होंगे. तो अशिल, because you have been through the whole process of like studying CAT, the career advancement track, which is now called the Diploma in Cloud Cybersecurity, आप थोड़ा सा ये explain करें and आप थोड़े से guidance दें हमारे students को कि how did you actually manage to get it covered in 6 to 8 months, and did you actually study the whole CAT or आपने कुछ specific चीजों पे ज़्यादा focus करा, कुछ चीजों में आपने कम focus करा? Okay, so let me say, because of my background, I did not have to study the whole CAT. Why? Because there are some mathematics courses, so we have studied like pretty much
so much Yeah, yeah, mathematics that it doesn't really matter that I study them. And then there were some other courses. I don't remember them all right now from yeah, top yeah, of my head, but still, the reason I didn't study those courses is because I don't have to, because I have already studied them in other places. yeah, So I just studied what I didn't know, and because of that, I could finish it quite fast. And but I would say how you can finish it fast or how कैसे कर सकते, consistency is the key. Consistency अगर नहीं है ना, एक एक टर्म है, आप सबको मैं जरूर बताऊंगा कि मसल मेमोरी. अगर आप अपने मसल्स आप या लुकअप करेंगे, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर सेम टाइम पे आप अपने ब्रेन को फोर्स कर देंगे, योर ब्रेन थिंक्स एंड स्टडीज और व्हाटएवर यू डूइंग, your brain or your part of that body muscles remembers that. Even if you forget it one day, they will remember and they will make you continue whatever you were doing. yeah. So that muscle memory comes with consistency. Unless you're consistent, you can't, finish things. So it doesn't matter आज आज आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, you have to sit and study. So that's how you get things and otherwise आपने कभी एक शुरू किया तो बस वो फिर कभी खत्म नहीं होती कोई चीज ना. That's true. वो Consistency is the number one thing. एग्जैक्टली तो वो काफी चीजों से आ सकती है. अगर आप सिंपली अगर रोज रोज की 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो दैट देन यू आर ऑलरेडी कंसिस्टेंट. अदर देन दैट आई मीन देयर आर still many ways you can learn being consistent, but again that's I think how I did and how everybody else who has finished it, that's how they have achieved it as well, so through consistency. Right, right, right. Uh, so, Mr. Ahmed Munir ka sawal hai, what are the extra benefits other than recorded lectures that you received from Al-Nafi courses? Ashhal, please. Well, for me the uh how to say, for me the most beneficial thing was that I could get an audience with Ashhal Bhai. I could talk to him directly because he is a person who has quite a wealth of knowledge, and unless you have a background or a base knowledge, you won't be able to converse with him in the things that he's quite well versed. तो जब तक आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का या किसी चीज के बारे में आपने जब पढ़ा ही नहीं है, तो आप वो उन बातों पे बात भी नहीं कर सकते किसी के साथ ना जो स्पेशलिस्ट है. फॉर एग्जांपल फैसल भाई है, तो मेरे लिए वो इट वाज द बेस्ट, द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग. अगेन फॉर सम अदर, फॉर मे बी अहमद मुनीर, you might be looking for some other benefit, but again मैं यही कहूंगा ना, हर किसी का जो बेनिफिट है ना वो वेरी करेगा. What you get out of your namaz is different from what another person get out of their namaz every day. So again it's vary, but the most important benefit वो ये है कि आप, if you are getting ready or prepared for the job requirement, that you can clear the interview and then you can get the job right away. I think that's the biggest benefit you can get out of it. Again, we can discuss recorded lectures और लोग भी देते हैं लाफे में क्या डिफरेंस है, blah 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 blah. But again मैंने जैसे कहा कि हर किसी का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो डिफरेंट होगा. मेरे से डिफरेंट होगा आपका एक्सपीरियंस और आपका और किसी से डिफरेंट होगा. डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल आपसे सही बात करिए. Mr. Javed Iqbal is saying I need better learning techniques for beginners and Al-Nafi courses. So again, कोई beginners के लिए आपकी कोई आपकी tips के how can they learn better? Should they make notes or I think this is what he's asking. Okay, so better learning techniques. Yeah, I would say people are different. Some people like doing things with hands. कुछ लोगों को ना बहुत हैंड्स ऑन काम पसंद होता है, ठीक है ना. कुछ लोगों को ना पसंद होता है कि वो सिर्फ लेक्चर को सुने और वो सुन के काफी सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लेते हैं. मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सारी टेक्निक्स को यूज करें, नोट्स को भी बनाएं, ठीक है. और एक होते हैं पोस्ट पोस्ट पोस्टिट्स होते हैं जो ना आप जो कार्ड्स होते हैं जिन पे आप चीजें लिख के याद Sticky करने notes. के लिए ना, स्टिकी नोट्स होते हैं, ठीक है ना. Yeah. मैं वो बहुत यूज करता था अपनी स्टडीज में, ठीक है ना. मैं नोट्स भी बनाता था.
मगर सबसे ज्यादा टाइम मैं स्पेंड करता था हैंड्स ऑन काम पे, क्योंकि जो लेक्चर आपने सुना है ना, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो अगर आपको भूल भी गया ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास ना गूगल, हमेशा आपके पास गूगल की एक्सेस होगी, तो आप किसी भी वक्त ना जाके गूगल करके वो चीज़ दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल तो जब तक आप उसको अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपके मसल मेमोरी को नहीं पता होगा ना कि ये चीज़ कैसे काम करती, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ना आपने, तब तक वो आपको याद नहीं होगा। और वहां से आपका ना क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस आएगा। फॉर एग्जांपल, आप जो लिनक्स का कोर्स है, रेड हैट इंटेंसिव एंटरप्राइज लिनक्स का कोर्स, जब तक आपने इसको हैंड्स ऑन नहीं किया हुआ ना, यू आर नॉट एबल टू गेट एनीथिंग डन। अगर आप उसके नोट्स पढ़ते रहे बैठ के सारा महीना ना, तो कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है ना। तो अगेन कोर्स टू कोर्स वेरी करता है। मोस्टली जो हैंड्स ऑन कोर्सेज, आई सजेस्ट यू डू दोस एज मच एज यू कैन, मल्टीपल टाइम्स। नोट्स को आप बनाएं, ठीक है, कोई बात नहीं, भूल जाता है तो आप उसको दोबारा रिवाइज कर लें आफ्टर 1 month अगेन। But that should not be, I would say, the only thing that you do. Hands-on is the most important thing, in my opinion, in this domain, in the emerging technology. यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. Our student success manager has said that you get to have resume development facility, internship, hands-on labs, and much more. Yes, so whoever is asking कि अगर आपको जानना है कि अल्नाफे, apart from lectures क्या provide कर रहा है, so let me tell you, the first part is your recorded lectures. आप पहले हमारे recorded lectures देखते हैं. उसके बाद once you become job ready in 4, 5, 6 months, however long it takes like for you to become job ready, अगर आप 6 महीने में job ready हो रहे हैं, उसके बाद हमारी हमारी resume development services भी हैं. हम आपकी रेज्यूमे भी बिल्ड करेंगे, हम आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करेंगे, एंड वी विल हेल्प यू गेट द जॉब एज वेल. सो इट्स नॉट जस्ट लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स. हमने आपको खाली लेक्चर से छोड़ नहीं देना. हमने आपकी रेज्यूमे भी हम आपको आपकी बिल्ड करेंगे एज पर योर जॉब, और हम आपको जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करेंगे. एंड वी हैव अ होल इंटर्नशिप प्रोग्राम एज वेल, जहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड जॉब का आपको एक्सपीरियंस मिलता है. यू गेट हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स. उसके अलावा वी हैव हैंड्स ऑन लैब्स एज वेल. सो आर लैब्स आर बेसिकली, हमने एक तरह के कंटेनर्स बनाए हुए, एनवायरमेंट्स बनाए हुए, जिसमें आप जाके हैंड्स ऑन काम करते हैं. आपको प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस मिलता है. सो दिस इज ऑल द बेनिफिट्स दैट यू गेट एज पार्ट ऑफ अल्नाफे. What is your professional background and how career advancement track helped you get a job in Finland? Ashhal. All right. So let me say, Finland में मैं already आया, I came to Finland to study master's degree, है ना. उसके बाद I started working already. So because what did I get out of CAD is that I got 2 to 3 job offers, right? I got one from Deloitte and one from another local company and one another on the LinkedIn. You know, so that I got after studying CAD. And why I let's say did not pursue those, because those were entry level jobs for me. And for me, I am already have quite a big bit of an experience. But I didn't pursue those. But what I'm trying to do is now I'm trying to study more. Let's say my next step is study DevOps and SysOps. When I can study those and or AI ops, I can have more experience with me. Then I can target for more high paying jobs and high paying positions. Because what now I make is more what I get, I would have received there. So that's why this cybersecurity diploma program or this CAD, these are, I would say, land you quickly onto more entry level jobs, I would say. But if you want to Yes. land onto a bigger, better paying job, then you definitely need to study more. Yeah, exactly. Because level 3 diploma, which is that diploma in cloud cybersecurity, it's a level 3 diploma, right? So it's an entry level diploma. If you want a job within 4 to 5 months, do that, but it's an entry level role. If you want a more advanced, job, higher paying jobs, go for level 5, level 6 diploma, the DevOps, SysOps, AI ops, etc. So let's take some questions from our audience, which is sitting here. Yeah, I think we can Whoever has take Mohsin. Yeah, I think Mohsin Mahmood has a question, so please let him speak. Huzaifah. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये था कि मैं कैट का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन था. एक तो बहुत लेंदी है और उसमें बहुत सारी चेंजेस हुई,
तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अभी मेरे स्पाउस जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं फिनलैंड के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो नेक्स्ट इनका इनटेक होगा, तो मैं उनकी जो जॉब मार्केट है वो तो आईटी के ऊपर ही बेस करती है। ठीक है, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि मैं दूसरा कोई कोर्स लूँ नाफे का, जो इनका है डेवऑप्स और क्लाउड। तो आप इस पे कुछ इंसाइट दे सकते हैं कि, क्योंकि मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड है, एमबीए और मार्केटिंग में हूँ और फाइनेंशियल सेक्टर में, तो लैंग्वेज बैरियर भी है, तो बहुत सारे लोगों से यही है कि आप आईटी का ही कुछ करके आओ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं डेवऑप्स और क्लाउड पढ़ के आता हूँ, तो क्या इसके लिए सर्टिफिकेशन और रिक्वायर्ड होगी, जस्ट लाइक साइबर सिक्योरिटी में होती है? और उसको पढ़ के आके मैं चाह रहा हूँ कि मैं ओल्ड जॉब नहीं करूँ, एक अच्छी एक प्रोफेशनल जॉब में कर सकता हूँ। आप बताएंगे आप कहाँ पे जा रहे हैं? आप वही हैं जो फिनलैंड आना चाहते थे, जो जी मुझे मैसेज किया? जी 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 जी, मैंने वो अच्छा, मैसेज जो आपसे किया। चले। अ, आपका सबसे पहले ये कंसर्न है कि आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो मैं आपको सबसे पहले एक सवाल पूछता हूँ। जब आपने एमबीए किया था स्टार्ट, तो आपका एमबीए का बैकग्राउंड था कोई? नहीं, मेरा एमबीए के बैकग्राउंड नहीं था। नहीं था ना? हम्म, तो अब नहीं। आईटी भी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए भी यू डोंट नीड टू हैव अ आईटी बैकग्राउंड, ठीक है ना? तो जो भी चीज स्टार्ट करेंगे, जब आपने कभी इनकी में पढ़ी नहीं हुई, तो उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपने एफएससी स्टार्ट किया, आपके पास एफएससी का एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है ना? तो आगे आपने पढ़ा था, आपको पता आ गया, ठीक है ना? So it doesn't really matter what your background is. You can study anything at any time in your life. Doesn't matter if you are 60, 70, 80, 40, 10, 11, 12. Doesn't matter what's your age. You can study anything, literally anything. I know people who are studying, becoming a medical doctor after engineering. It doesn't really matter, ठीक है ना? तो उसको आप साइड पे करते हैं। हम्म दूसरी बात है कि देखें, आपका फोकस यहाँ पे है कि यू डोंट नीड टू डू ऑड जॉब्स, यू वांट टू डू द राइट फुल टाइम जॉब राइट अवे, ठीक है ना? अगर आप आते हैं स्पाउस वीजे पे, योर मेन स्पाउस इज स्टडिंग एंड यू आर लाइक ऑन अ स्पाउस परमिट, so I strongly suggest that you depends on your budget. If you have what you can afford, like what Faisalbhai says all the time, you can do AI ops. If you don't have if you have less money, then AI ops, you can do SysOps and DevOps. If you still don't have that much money and you just want to do the bare minimum to secure the job, then just do DevOps. Then I mean, below than that, I wouldn't recommend anything. Not just simply no cybersecurity program, because doing that alone might not help you that much, because there's a lot of competition. And so I would suggest the minimum you should do before you come here is to finish the DevOps, what Nafi is providing, so that your CV says that you know all those stuff, and then you can, start applying for sending your resumes to different companies, and hopefully you will be called for interviews. I'm pretty sure. So डेवऑप्स और क्लाउड ज़्यादा सही है, ये डेवऑप्स और SysOps जो है? DevOps समझ नहीं आई। क्लाउड तो सबके साथ है, सबके साथ भी है वो, मेरे ख्याल से DevOps है ना? इज इट करेक्ट मुस्तफा? Yes, absolutely. DCCS is एग्जैक्टली, a part of all the tracks. एग्जैक्टली। लेकिन ये तो तो वो डिफरेंट शो हो रहे होते हैं कोर्सेज, दो कोर्सेज ये अलग शो हो रहे होते हैं, डेवऑप्स और क्लाउड एंड डेवऑप्स एंड SysOps। जी, बिकॉज देखें जो डेवऑप्स एंड क्लाउड है, दैट इज अ लेवल 4 का, वो एक बेसिक लेवल 4 का डिप्लोमा है, ठीक है? उसके अंदर DCCS है, जो आपका डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी है, प्लस डेवऑप्स। जो आपका डेवऑप्स एंड सिसऑप्स है, दैट इज DCCS प्लस डेवऑप्स प्लस सिसऑप्स। ये एक लेवल 5 का डिप्लोमा है। नहीं, इसमें क्लाउड भी होगा? उसके अंदर जी क्लाउड, देखें क्लाउड बाय डिफॉल्ट सबके अंदर है। अगर डेवऑप्स एंड सिसऑप्स है, उसके अंदर मेंशन नहीं है, उसके नाम में मेंशन नहीं है, बट उसके अंदर DCCS जो क्लाउड है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है इंक्लूडेड। और इसका एडवांस वर्जन मीन्स वो AI SysOps है वो, AI ऑप्स AI है जी। Ops। AI AI ऑप्स, AI प्लस डेवऑप्स प्लस सिसऑप्स प्लस क्लाउड। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो सर बस अगर मैं ये कोशिश करता हूँ, एक सर्टिफिकेशन नाफे से भी लेता हूँ, तो जब मैं जॉब के लिए लैंड करूंगा तो फिर वो मुझसे रिक्वायर तो नहीं करेंगे यार मुझे अपनी सर्टिफिकेशन भी दिखाओ, कोई नहीं, आई थिंक इंटरनेशनल और। द थिंग इज के आप लेट से आप अनाफे से कर लेते हैं, आपने कोर्सेज पढ़े हैं, आपने सर्टिफिकेशन, मतलब ये कि जो इनका एग्जाम है ना कि RQF लेवल के जो एग्जाम, Yeah. एजुकॉल के एग्जाम आपने वो नहीं दिए, तो डजंट मैटर, ठीक है ना। what matters is that you finish everything, you do the internship, that you get the internship letter out of them। और होगा ये कि जब आप पहले इंटरव्यू पे जाएंगे ना, वो आपसे वो सारी चीजें पूछेंगे, ठीक है ना। अब अगर आप अपना पहला इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं ना, तो देन दे नो यू ऑलरेडी नो दिस स्टफ, तो उसके बाद वो फिर आपसे नहीं पूछेंगे। इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं होती, because what they care is that you know how to do things, you can get things done, that's what matters the most to them। Maybe in some cases, in big companies they might ask for certification, but again, you could say that I have signed up for my exam and I'm supposed to take the exam, and after that I will graduate, with a certificate, but for now I'm like looking for jobs, so it's not a big deal, बड़ा मसला नहीं है। एज लॉन्ग एज आपको अगर सारी बातें आप पता है, आप जो मैं उनको कह रहे हैं, उनको सारे सवालों को दे रहे हैं, असाइनमेंट्स करके उनको दे रहे हैं, इंटरव्यू जो भी है, तो बाकी बाकी चीजें सारी सेकेंडरी। नहीं सर, अगर मैं बजट अपना कर लूँ थोड़ा सा, और हम्म तो अगर AI ऑप्स कर लूँ, AI ऑप्स को मैं लेकर चलूँ, हम्म। तो ऐसी बात है वो 6 महीनों में तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा ऑफ कोर्स। लेकिन लेकिन मैं इसको लेता हुआ चलूंगा तो प्रॉब्लली ये है कि मैं जॉब के लिए मैं कर सकता हूँ वहाँ पर, हाँ बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल। दिखा आप सकता हूँ कि मैं पढ़। जी, आपका टारगेट कब है, किस ईयर में आप जाना चाहते हैं फिनलैंड? सर ये दिसंबर जनवरी में ओपन होंगे एडमिशन इनके, तो एडमिशन इसमें एग्जैक्टली। अप्लाई कर। तो जी, अगले अप्लाई साल है मैं ना, जुलाई। आपके पास 1 साल पड़ा है, 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है, ठीक है ना, 1.5 साल आपके जी पास। तो 1.5 साल जी में जी आपका जो AI ऑप्स, आई थिंक इफ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग जी जी डील। जी जी जी, बस ये इसको लेकर मैं इंशाल्लाह फिर हाँ, कोऑर्डिनेशन करते हुए। आई अब सजेस्ट दिस। मोहसिन साहब, एक ठीक है। आपके लिए आई लेट यू नो वन थिंग जो आपके लिए था, लाइक थोड़ी सी आसानी करेगी, वो ये है कि जो AI ऑप्स का डिप्लोमा है, बाय द लेंथ ऑफ इट वो आपको लगता है बहुत लंबा रहा होगा, लेकिन उसमें आपको इफ अगर आपका गोल ये है ना कि आपको जल्द से जल्द आपको जॉब हासिल करनी है, आपको पूरा पढ़ना, आपको पूरा नहीं पढ़ना, आपको उसका एक बेसिकली मेन चंक पढ़ना है, राइट। हाँ हमारा गोल ये नहीं होता कि आपको आप पहले पूरा पढ़ेंगे फिर आपको जॉब मिलेगी। अगर आप उसका 40% भी पढ़ लेना, उसका जो मेन उसके जो कोर्सेज हैं वो हम आपको गाइड करेंगे कि आपको पहले क्या पढ़ना है, राइट। तो अगर आप उसका 40% भी पढ़ लें, जो उसका मेन उसका जो क्रक्स है, यू विल बी एबल टू गेट अ जॉब। तो आपको हाँ, पूरा नहीं पढ़ना जॉब के लिए, आप उसका एक तरह का मेन पार्ट पढ़ लें, एंड देन यू कैन गेट अ जॉब, और आप फिर जॉब के साथ साथ उसको आप बेसिकली पढ़ते रहें। आई विल ऐड के जो मुस्का कह रहे हैं ना कि 40% पढ़ ले, उनका कहने का मतलब है कि आप अगर 40% जब कंप्लीट हो जाए, तो यू कैन स्टार्ट सेंडिंग योर सीवीज आउट, ठीक है ना। ये उस टाइम पे आप अपने सीवीज भेजना शुरू कर, डजेंट मैटर फिनलैंड में आप अभी नहीं भी हैं, तो आप बाहर भेजना शुरू कर दें, बिकॉज जब आप स्पाउस वीजा पे आएंगे ना, so it doesn't matter that you need to have a job from Finland. You could have a job from any other European country or even from US, UK, doesn't matter, ठीक है ना। तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, तो आपके पास पूरी दुनिया अवेलेबल है। आप स्टूडेंट वीजा, आप स्पाउस वीजा पे आप ऑलरेडी हैं, ठीक है ना, तो यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, यू आर फ्री टू वर्क एनीवेयर। जी जी तो फिर आप पूरी दुनिया में आप अप्लाई करना शुरू कर दें। तो यूएस से स्टार्ट करें रिमोट जॉब से, और जब फिनलैंड में आ जाए तो फिर फिनलैंड में शुरू करते हैं अप्लाई करना, तब तक आप पढ़ते जाएं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। No worries. The next question that we have is from Mr. Ahmed Munir. Please allow him to speak. Assalamualaikum. वालेकुम Walaikum अस्सलाम। assalam. I think my main question would be about Finland in general. Ever since I was a kid, I've heard that Finland is a pretty good place to settle down. Uh, what are your thoughts about it? Could you let me know more about the quality of life in Finland?
tax वगैरह, like what's the scope of an let's say a computer scientist over there? Masters का क्या scene है? Anything related to that? Okay. So your question is quite broad in a, but still I try my best to answer it. So you're asking what's the best, is it like the best country to settle down? So when people say settle down, I don't know what to what extent they would want to settle down. So do they? I'm assuming that you are hoping to get a job here, probably start a family here, and then have kids and so on. So and buy a house and a car and so on. So probably that's what you are asking. So yes, I would say the quality of life in Finland is like one of the best in the world. Uh, the tax rate in the Western countries, in the Western Europe, tax rate is like the one of the highest in the world. So you can expect quite big tax on your salaries. Let's say you get to take home uh, if you're earning very high, let's say more than 100k euro in Finland, then you're get actually on 50% tax rate, something like that. So right. So Yeah, that's what again, I've heard. but what happens in that in return you get free healthcare and free education for yourself and for your family, like for your wife and kids and so on. Anybody can Yes, go I'm study. aware, but is it worth it is my question. Worth it? What's worth it? Like depends what is worth to you. The question is that. No, that's a good question, but like, I guess what I'm trying to ask is that, are you happy over there? Like, is it a good option, Well, well, the thing Finland? is, happiness is subjective and relative, right? Definitely. So, my situation you can't imply over yourself or to anybody else. But what I would Agreed. say, uh, if you are, let's say, looking for the quality of life, then it is one of the best in the world, right? What does Yeah, quality of and life means is that you get good food, yes, you get clean air, yes, you get nature, yes, you get a high standard of living, a nice place yeah, to you know sleep, and you get all the good amenities of life. Then yes, you know it's like the happiness factor in the world. There's always a service like the happiest country in the world. So if you go look on the research, there is like so many things that contribute to happiness, right? It's not just one true, thing. true. So it depends how many of those things. There are like more than 100 points that contributes to happiness. So I don't know which I of think those at points the are more uh, important to you. So it again is very subjective and relative. So I think at the end of the day, for everyone, the biggest priority will always be uh, getting food at least twice per day, and having a good place to sleep, like you said. So, uh, I mean, khair, what I was wondering is, okay, basically, most countries, man, you have to struggle a lot in the beginning because of lack of, yani, it's probably mostly really hard to find a job in most countries. They don't hire expats, and I'm assuming you're Pakistani as well, so it's hard to find jobs in these European countries. So by quality of life and by all of those, like मैंने एक summary करके एक सवाल पूछा था, but in like you said, it's a broad question. तो मेरा सवाल mainly यही था कि all of these struggles combined, how hard was it to finally settle down? जो मैंने phrase use किया था ना, how hard was it to finally start your life over there? uh, again, I would say I had my share of struggles, and they were no different to what other people had experienced. So that is why we all are here gathered. That we are telling you that if you already make the struggle studying all these courses in Pakistan before you come to these countries, then you don't need to struggle in these countries. Why? Because you get a chance to already land or apply for jobs while you're coming here, and that makes it easier for you.
So Interesting. making struggle in Pakistan, where in your comfort zone, is much more easier rather than coming here and making a lot of struggle in finding jobs. That's I I didn't get it. learn myself. I didn't learn myself, and that's why we are all gathered. That I using my experience and other people's experiences and sharing it with everyone. Please make a wise decision. Of course, you can go anywhere if you have the money. You can go anywhere, but is it worth it True. if you have to go and struggle? If you have to go eat, sleep on the floor? If you have to go work at night in the cold, -30 degree, right? It's, again, it depends. If it's worth for Yeah. you, then it's fine. But if it's not, then do the struggle before, go get a good paying job, and then make a very, very nice living there, the best quality life you can ever All imagine right. for yourself. So yeah, that's what we All are right. suggesting. All right. Thank you so much. That was it. Yeah, You answered my question pretty well. All right. you're Thank welcome. you. Assalamu alaikum. Thank you, Evan. Thank you. That was good discussion. So I think that was it. We have taken questions from everyone. So and we have also reached our time slot. So Ashhal, thank you so much for giving your time to us. I Yeah, hope you're this welcome. this conversation has helped a handful of people, and we will be recording this conversation, and we will also be posting this on our social media channels, and we will email this to everyone who has joined this meeting. So again, once again, thank you everyone for joining us, and thank you, Ashhal, so much for your time. Yes, thank you for hosting me, and I wish everyone a nice evening. So, Thank you, thank you, thank you. Goodbye. Bye. okay.